case study is about Avenue Supermart. This is the name of a company or a brand called DMart. DMart सबने सुना होगा. It's a big retail chain, focuses on essential goods, typically FMCG staples, basically food products, home products. Predictable demand patterns, daily consumption के products वो रखते हैं. Large volumes, their business model is large volumes, low margins, and strong vendor ecosystem in India. उनके जो suppliers का एक strong ecosystem है. They focus a lot on supplier relationships and so on and so forth. So let's look at the demand characteristics. Demand characteristics जो हमने देखे थे, जो फिशर के मॉडल में हमने देखे थे, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव अ स्टेबल डिमांड, प्रिडिक्टेबल है, टिपिकली फंक्शनल प्रोडक्ट्स हैं इनके, डे टू डे खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं. लो प्रोडक्ट वैरायटी कंपेयर टू अदर मॉडर्न रिटेल कंपटीशन. दे डोंट बिलीव इन यू नो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वैरायटी फॉर द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी, एंड दे इनकरेज बल्क बाइंग बिहेवियर. सो दे नो कि छोटा छोटा नहीं खरीदेंगे हमारे कस्टमर जो खरीदने आएंगे, और दे ऑल्सो इनकरेज बल्क बाइंग बिहेवियर. सप्लाई साइड करेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसके देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सप्लायर, डोमेस्टिक सप्लायर बेस, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग वेंडर इकोसिस्टम, दे हैव एंटर्ड इनटू लॉन्ग टर्म वेंडर रिलेशनशिप्स, लॉन्ग टर्म वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, और इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है. So their supply chain strategy is efficiency through cost leadership. So they focus on कि we need to be very very efficient. अगर हम इस metrics में देखें, so they are talking about demand uncertainty is low and supply side is also stable. हमारे पास vendors हैं जो long term contracts हैं, reliable vendors हैं, demand बहुत ज्यादा मैंने product variety रखी नहीं है, functional products हैं, so I can focus on cost, right? So some of the supply chain practices, क्लस्टर बेस्ड स्टोर एक्सपेंशन. अगर वो एक स्टेट में खोल रहे हैं या एक क्लस्टर में खोल रहे हैं, तो वहीं पे वो फोकस करते हैं ताकि टोटल आपकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो. ऐसा नहीं आप देखोगे एक स्टोर यहाँ खोला, दूसरा स्टोर 1,000 किलोमीटर दूर खोला, राइट? सो दे बिलीव इन क्लस्टर बेस्ड स्टोर एक्सपेंशन. दे डू कीप हाई इन्वेंट्री. एफएमसीजी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फूड कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, but then they also focus on fast throughput. Strong supplier relationships, procurement side पे जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, तो हमने Raljic metrics देखा था, उसके हिसाब से they have been focusing on very very strong supplier relationships. Bulk buying ये करते हैं, right? Store ownership, as I said, their focus is to reduce the overall operating cost. क्योंकि वो ओवरऑल उनकी जो सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है वो है एफिशिएंसी थ्रू कॉस्ट लीडरशिप. हमें अपनी कॉस्ट बचानी है, तो जो ऑपरेटिंग लेवल कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए दे ओन देयर ओन स्टोर्स, दे हैव देयर ओन स्टोर्स. एंड स्टैंडर्डाइज्ड रिप्लेनिशमेंट साइकिल्स. तो ऐसा नहीं है कि अ, अभी चाहिए तो अभी दे देंगे. दे प्लान इट वेल. वंस इन fortnight they replenish, send stocks to their stores, and they manage it that way. So they have standardized replenishment cycles depending on क्या demand है. किसी में एक वीक में भेजना है, किसी में 2 वीक में भेजना है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड पैटर्न्स एंड थिंग्स लाइक दैट. किसी में 3 दिन में भी भेजेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द स्टोर साइज, द डिमांड पैटर्न्स एंड थिंग्स लाइक दैट. So they have their own standardized replenishment cycles. So final outcome for them is cost efficiency is high, inventory turnover is high, margins are stable, low but consistent, and stockouts are minimal. So this is a classic example of an efficient supply chain. Classic example of an efficient supply chain. Demand pattern is predictable. Supply side is also predictable. Supply side is stable. So not much of a challenge. They can focus on cost leadership. उनको अपना operating cost कम किया थ्रू स्टोर ओनरशिप, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम किया थ्रू क्लस्टर बेस्ड स्टोर एक्सपेंशन, इन फास्टर थ्रूपुट से वो है रिप्लेनिशमेंट साइकिल्स उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दी. सो दिस इज व्हाट दे हैव डन ऑपरेशनली, एंड
बिजनेस operational level practices के बीच में है supply chain strategy. They have identified demand characteristics, they have identified supply characteristics, and based on that, they have built a supply chain strategy, which is efficiency through cost leadership. So this is a clear case of efficient supply chain.